डियर स्टूडेंट्स, दिस इज यूर RSR सर विद्याराधना नांदेड़ सेंटर। हम डिस्कस कर रहा है एक्सेलेंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में बेस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा है, उसमें रोटेशनल मोशन एडवांस PYQs बात कर रहा है। सो चलो, हमको एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किया तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट क्वेश्चंस विथ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से हम डिस्कस करना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रोग्राम एक्सेलेंस इन फिजिक्स रोटेशनल मोशन क्वेश्चंस। सी, हियर इज वन क्वेश्चन. Read out this one first. Put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with left one at 0 and the right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. So पहले जो बोला उसको डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बताया हमको क्वेश्चन में, दे सेड लाइक दिस, ऐसा एक मीटर स्केल है, इसमें ऐसा 2 फिंगर सपोर्ट से रखा था। दिस इज लेफ्ट फिंगर पोजीशन at origin at 0 and right finger is at 90. For example, here this is right finger and here the value is 90. Okay, but they said later after some distance the left finger stops and the right one starts slipping. So पहले ऐसा रखा था, दोनों एक दूसरा को पास लाने को कोशिश कर रहा है। ऐसा कोशिश में इस फिंगर आ रहा है, ये फिंगर इधर ही रुका था, थोड़ा देर को आने को बाद, सो फॉर एग्जांपल बराबर मिड पॉइंट इधर 50, सो ये वाला इधर से फॉर एग्जांपल इधर तक आने को बाद, फॉर एग्जांपल ये कितना दूर है, 50 से कितना दूर है, 50 से फॉर एग्जांपल टेक दिस वन एज XL, इतना दूर में रहे तो इतना दूर तक आने को बाद ये लेफ्ट फिंगर रुक गया, राइट फिंगर चालू हो गया। सो लेटर क्या बोल रहा है, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस XR, ये चालू हो गया ना, ये भी थोड़ा दूर आने को बाद, सो कितना दूर में, ये दूर फ्रॉम 50 से XR दूर को आने को बाद, XR फ्रॉम द सेंटर 50 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल एंड द लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन। जब ये आके इधर रुक गया तब ये लेफ्ट फिंगर वापस चालू हो गया मूव होना। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द 2 fingers. If the coefficients of the static and dynamic friction between the fingers and the scale are 0.4, 0.32 respectively, the value of XR in centimeter is. हमको XR वैल्यू चाहिए। सो क्वेश्चन ऐसा देखने के बाद स्टूडेंट को ज्यादा लेंदी लगेगा। दिस इज 2020 क्वेश्चन, सो लेंदी का बात नहीं, जैसा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस क्वेश्चन में बोल रहा है वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हम परफेक्टली पकड़े तो काम आसान होता है। सो कैसा है ये कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, देखो ये डायग्राम में। अच्छा, सो इनिशियल सिचुएशन में क्या बोला था, व्हेन दिस लेफ्ट फिंगर इज इन मोशन, राइट फिंगर इज एट रेस्ट। सो दैट पॉइंट ओनली डिटेल आई मेंशन। इनिशियल केस में क्या हो रहा है, इनिशियली left finger in motion and right finger at rest, right finger at rest. So that means left finger motion में आ रहा है, right finger rest में है। इसका मतलब लेफ्ट फिंगर पे डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होता, राइट फिंगर पे static friction act होता, because right finger is at rest. So these 2 frictions should be equal and opposite, then only scale can stay. For example, imagine this as a scale. So this is the question they are giving you. ऐसा ये 2 फिंगर्स को पास लाने की कोशिश कर रहा, तब ये फिंगर रेस्ट में है, दूसरा फिंगर मोशन में है। सी, सो इसका मतलब दोनों फिंगर्स पे
जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो दोनों एक दूसरा को इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना है, तब भी वो स्केल रेस्ट में रह सकता है. So that's why first step what I do, I'll use translational equilibrium. If you use translational equilibrium, left finger it is in motion, so dynamic friction means coefficient of dynamic they gave 0.32, so kinetic coefficient 0.32 into, हाँ इसी इसको ऊपर एक्ट होने वाला नॉर्मल फोर्स को एन एल कहता हूँ. So if you take this one as n l, so normal force into coefficient, that is going to be dynamic friction, that is equal to right finger का static friction coefficient दिया था 0.4 into उस पे एक्टिंग नॉर्मल फोर्स को एन आर का हो. सी इस पे इनिशियली इधर है, इस पे एक्टिंग नॉर्मल फोर्स को एन आर कहेंगे. Say this is first expression you got from translational equilibrium. Now NL and NR, two unknowns are there. So that's why what I do, we take rotational equilibrium also, because it is in rotational equilibrium also. So as it is in rotational equilibrium, इस पे torque due to this left side normal force and torque due to this right side normal force, both should be equal and opposite. Then only scale can be in rotational equilibrium. अच्छा, so फिर वो काम करेंगे. So left side normal के लिए लेफ्ट साइड नॉर्मल इनटू लेफ्ट साइड वाला कितना दूर में है, एक्सेल दूर में है, आई विल टेक दैट एक्सेल इज इक्वल टू राइट साइड टॉर्क फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स, and either axis, about this axis I am taking torque about this axis. So इस पॉइंट को सेंटर C कहेंगे, torque, so I am going to take here torque about center C. So left side torque होता है N L into X L is equal to right side torque होता है N R into, ये right side वाला इधर से कितना दूर में है. इनिशियली दिस इज द सिचुएशन, ये छोड़ो ये नहीं आया. इनिशियली फर्स्ट केस में दिस इज द सिचुएशन. सो 50 से इधर तक ये सेपरेशन कितना होगा, ये तो 90 है, ये 50 है. सो 50 to 90, दैट मीन्स दिस इज 40 सेंटीमीटर. इनिशियल केस, फर्स्ट केस में ये बोला था, सी आफ्टर सम टाइम some distance the left finger stops and see what they said initially, only left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. So this is ये पूरा को फर्स्ट केस मानेंगे, फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस को लिख रहा हूं मैं स्टेप. सो फर्स्ट केस में ये रेस्ट में है, सो ये 40 सेंटीमीटर, सो NR into 40. So this is say equation 1, say this is equation 2. So you can figure out XL value by dividing 2 with 1. So 2 by 1 किया तो, so 2 में XL into NL, इधर NL cancel, so XL by 0.32 should be equal to here 40 by NR cancel, so 0.4. 40 by 0.4 means 0.4 is 4 by 10, 10 ऊपर जाएगा, 400 by 4, that means 100. So XL will be equal to 0.32 into 100, 32 centimeter. You got XL. So this value you got. मैंने फर्स्ट केस को किया था, फर्स्ट सिचुएशन एनालिसिस इट इज. So this whole analysis is first situation, first case. इतना अच्छा तरीका से क्लैरिटी से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते, स्टेप्स वाइज लिख रहा हूं बच्चों, ताकि आप वीडियो देखते वक्त आपको एडवांस क्वेश्चन भी परफेक्ट क्लैरिटी से समझना चाहिए, बिकॉज ऑफ वी आर मेंटेनिंग दिस क्लैरिटी. अभी सेकंड केस को जाएंगे. We'll go to second case.
सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में क्या बोले? आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स and the right finger starts slipping. Left finger stops and right finger starts slipping. Right finger चालू हो गया slip होना. Then the right finger stops at a distance XR. Then the right finger stops at a distance XR from the center. Means now new diagram will be like that. इधर से ये राइट वाला थोड़ा दूर आया 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 आया, ये 50 है, इधर से थोड़ा दूर को आने को बाद रुक गया. ये कितना दूर बोला? ये थोड़ा दूर XR कह रहा है, अभी रुक गया. ये किधर है? ये इधर तो स्टॉप हो गया ऑलरेडी. ये वाला कितना है? यू गॉट दिस इज XL 32. सो इधर से 32 पे लेफ्ट फिंगर है, राइट फिंगर इधर तक आके रुक गया. ये एनालिसिस में हमको ये समझता लेफ्ट फिंगर एट रेस्ट. लेफ्ट फिंगर एट रेस्ट नाउ. रेस्ट बोले तो लेफ्ट फिंगर पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता. राइट फिंगर इज इन मोशन. राइट फिंगर इज इन मोशन. राइट फिंगर मोशन में है, इसलिए राइट फिंगर पे क्या एक्ट होता? डायनेमिक फ्रिक्शन एक्ट होता. ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन. सो अभी हम लेफ्ट फिंगर रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे. राइट फिंगर मोशन में है, इसलिए हम क्या लेंगे? डायनेमिक फ्रिक्शन. सो लेफ्ट फिंगर को स्टैटिक फ्रिक्शन लिया तो 0.4 इंटू एन, लेफ्ट साइड नॉर्मल फोर्स, इस पे एक्टिंग नॉर्मल फोर्स एन कहता हूं. इसको दिस इज लेफ्ट साइड नॉर्मल फोर्स एनएल इज इक्वल टू राइट साइड का फ्रिक्शन. राइट साइड तो डायनेमिक फ्रिक्शन है, मोशन में है. सो 0.32 इंटू एन राइट साइड एन आर नॉर्मल फोर्स. सो फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिया था, अभी लिएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसा लिएंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लेफ्ट साइड टॉर्क, सो दैट इज एनएल इंटू लेफ्ट साइड वाला तो 32 सेंटीमीटर दूर में है, इज इक्वल टू राइट साइड इसको ऊपर, अभी तो यह वाला इधर तक आ चुका है, इधर से इधर को आ चुका है. सो अभी ऐसा ऊपर एक्ट होता है एन आर. सो दैट एन आर इंटू ये कितना दूर में है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस XR. ये XR वैल्यू है, हमको पहचानना पड़ेगा. सो हो गया. इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इक्वेशन 2 कहेंगे. हमको XR चाहिए, इसके लिए मैं करता हूं 2/1 अगेन. सो इफ यू डू 2/1, what you are going to get, think in your mind, check here. So XR by XR, इधर NR कैंसिल जाएगा. सो XR अपॉन 0.32 इज इक्वल टू, इधर साइड NL कैंसिल जाएगा, 32 अपॉन 0.4. So then XR will be equal to, what is this? 0.32, 0.4. You can take this one as 0.40, means 40, 32, 8s and 10s. 8 times, 10 times. 8 means again 4 and 5. So 4 इधर भेजो, 5 इधर है. So 32 by 5 into 4 उधर गया था, that is equal to 5 ones 5, 6.4 into this 4. So we are getting this answer as, what we are getting this answer finally? So 16 and 24, 25.6, perfect, 25.6 centimeter. So you got answer 25.6 centimeter. So beautiful question. The beautiful thing is the way how we discussed this one. This is first case and this is second case, the diagram analysis and this everything. Beautiful. I suggest all students solve the questions in conceptual way, exactly to understand the question in a best way. It is not about just getting the answer. It is about how we are approaching the question,
how we are analyzing the question. That is the purpose of our excellence program. चलो आगे बढ़ेंगे. We'll take next question. I hope you like my work. So perfectly पूरा explanation अच्छा तरीका से लिख के then हम आगे बढ़ेंगे. Next question. A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object. This is cylindrical object of mass m and radius r, perpendicular to its axis as shown in the figure. So this is axis. इसी axis को perpendicularly force लगा रहा है. They said the coefficient of friction between the object and the ground is mu. Object को ground को बीच में coefficient of friction mu. The center of mass of the object has an acceleration a. Object का center of mass का acceleration a बोला है. The acceleration due to gravity is g, given that the object rolls without slipping. So pure rolling. This is pure rolling. Which of the following statements correct? More than one answer correct. This is 2021 question. चलो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है? For the same f, the value of a does not depend on whether the cylinder is solid or hollow. For the same f constant रखे तो the value of a acceleration does not depend whether cylinder is hollow or solid. इसका मतलब इस पे डिपेंड नहीं होता पूछ रहा है. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं होता ऐसा कह रहा है. हम चेक करेंगे सच में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड होता क्या नहीं. लीनियर एक्सेलरेशन. पहले इधर होता क्या एनालिसिस देखो. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स about this axis, rotation not possible. Because of this force F about this axis, rotation is not possible because force is passing through the axis. फिर ये फोर्स की वजह से सीधा लीनियर मोशन में जाते क्या? No, because at bottom point they gave friction also. At bottom point they are saying friction is there. So this friction acts this side. Now because of this friction force, a perpendicular distance say RA. So R bar cross F bar, if you do R bar cross F bar, because of this friction, anti-clockwise torque will create. Sorry, this is clockwise torque. ये clockwise torque तैयार होता. Because of this clockwise torque, this wheel turns and moves forward. फिर ये wheel forward move होता है, ये हमको पता चला. तो फिर अभी ये torque कितना? This friction force into this R, that is torque. So इसको हमने equation लिखे तो हमको ऐसा आएगा. First, torque equation you are going to get torque is equal to I alpha. So torque is that friction force into about this axis I am taking, friction force into that radius r, perpendicular distance, that is equal to I into alpha. As they said pure rolling, this alpha later you can convert in terms of translational acceleration also. That is equation 1. And another one, linear equation also you can write. That linear equation is, they said it is going this side with acceleration A, so then that force is more, so that side more force minus backward acting friction force should be equal to mass of the body into acceleration of the body. And as they said pure rolling here, pure rolling condition if you use, that is that acceleration A equal to R alpha. So A equal to R alpha, instead of alpha you can take here I into, instead of alpha A by R you can write. So from these two what you can get, or if you take here you can eliminate friction here, then you will get that A value. See, or if you take this side, IA by R square is friction, put here,
So F minus that friction value if you put there, so I A upon R square is equal to MA. So F will be equal to A take common, so I by R square plus M, this should be that A you took common. So I by R square plus M into A. So A value it is going to depend on F I. So that means F by I by R square plus M is equal to acceleration. You got an expression for acceleration. See here, acceleration is depending on the moment of inertia. Moment of inertia of the solid body and hollow body are different. So acceleration is depending on moment of inertia. But what they said, acceleration does not depend on solid or hollow body. Wrong bola. So this is wrong. Option 1 is wrong. Acha analysis. Second option, for a solid cylinder, the maximum possible value of A is 2 mu g. ओके, ये के लिए एक्सप्रेशन आया, ये ए वैल्यू मैक्सिमम 2 म्यू जी बोल रहा है. ओके, सो कैसा ये वैल्यू मैक्सिमम 2 म्यू जी, आप कैसा गेस कर सकते हो? ये वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी. ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो हमको इधर एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना पॉसिबल, that is mu mg. Friction force maximum is mu mg. So if you put that friction force maximum here, then what A value we will get? Here the expression we got acceleration. Otherwise simply you can do in this way also. In this acceleration expression, this F you replace with F plus ma, F plus ma. Then what we are going to get, that maximum value friction maximum value mu mg. So backside को friction maximum आप ले सकते हो mu mg and आगे forward को F. Then this F will be from this expression you can write as friction plus ma. Chalo submit here. Then what we are getting, please check. So F is friction plus ma upon I. This is solid cylinder. Solid बोला, ऑप्शन 2 में solid cylinder बोल रहा है. Solid cylinder को moment of inertia mr square by 2. So mr square by 2, r square cancel. So m by 2 plus here m. So this is equal to a. A value you need to figure out. So mu value, F value is maximum mu mg. Friction maximum possible value is mu mg. पहले फ्रिक्शन मैक्सिमम लेना क्या हमको? यस मैक्सिमम लेना पड़ता है, बिकॉज ये वाला इधर भेजो, दिस 3/2m. सो F plus ma is equal to a into this is 3/2 ma. So ma take that side, this friction will be equal to ma goes that side, that is ma by 2, because 3/2 ma minus ma, so ma by 2. So a value is going to depend on this friction. So friction maximum value, you can take this friction maximum value as mu mg is equal to ma upon 2. M got cancelled, 2 bring this side. So that maximum value of the acceleration you got as 2 mu g. Perfect. This is going to be maximum acceleration. Why maximum acceleration? Because here F value we took mu mg. So F value maximum we took. F maximum is mu mg. Mu into n. Mu into n is expression for the limiting friction. Remember my dear students. So mu into n, this is limiting friction. F maximum I took. So that's why A maximum I got. So option 2 is perfect. Beautiful question. Beautiful explanation. चलो स्लाइड चेंज करेंगे और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्या बोले? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज mu mg.
क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट है क्या? हमको क्या आया फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक्सप्रेशन? सो इधर हमको फ्रिक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकाले तो हाउ कैन यू से फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज दिस? we mu mg is maximum friction. Mu mg is maximum friction. So you can't say friction that is maximum, that is always constant, you can't say. Otherwise expression में देखें तो आपको, so this f, if you take that side ma, this side f minus ma, so friction is equal to f minus ma, that f constant लिया तो भी m into a, that a is not going to be constant because that friction is variable here. So ये situation में you can't say the magnitude of the frictional force on the object due to the ground is always mu mg. You can't say always mu mg because this is maximum friction, my dear student. It's variable. So wrong. Last option, for a thin walled hollow cylinder A equal to F by 2m. हमको thin walled hollow cylinder. So hollow cylinder के लिए acceleration F by 2m बोल रहा, acceleration expression हमको आया. So acceleration expression आया तो हमको इसी acceleration expression में moment of inertia hollow cylinder को mr square लेना चाहिए. So what you got expression for acceleration this. So इधर f बोले तो small f plus ma रख सकते, इधर रखे. ये एक्सप्रेशन में ये स्मॉल एफ जगह पे आपने फॉर ए थिन वॉल्ड हैलो सिलेंडर ये इक्वल टू एफ बाई 2m, इस एक्सप्रेशन में सेम म्यू एम जी लेके एंड इधर यू हैव टू टेक चेक इट. सो न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्लाइड को नहीं जाके इधर मैं करने की कोशिश करता हूँ. फॉर दिस चेक इट, व्हाट यू गॉट एक्सप्रेशन फॉर एक्सरलेशन, दैट एक्सरलेशन इज इक्वल टू यू गॉट फ्रिक्शन फोर्स प्लस ma upon I is moment of inertia. This is going to be, I value is going to be for hollow cylinder, excuse me, mr square, r square cancel, so m plus m. So that is equal to, this friction is mu m g, the maximum possible acceleration I am taking. So in this fourth case also they are giving this acceleration maximum possible if you think. So plus m a upon m plus m 2m. So 2m idhar bhejo. So 2m a and bring that ma this side, minus ma is equal to mu mg. So this is going to be ma is equal to mu mg. So m cancel, a equal to mu g. So A equal to mu g will be maximum possible acceleration. This is maximum acceleration. So let's see, हमको जो आया this is maximum value. लेकिन आपको आंसर तो mu g टर्म्स में नहीं रखे, f by 2m में रखे. So acceleration you should keep that in terms of f. So मतलब इधर f ऐसा ही रखेंगे, यही जगह पे mr square रखे तो r square कैंसिल, m plus m 2m f by 2m, perfect. So actually maximum acceleration पूछा या नहीं, मैंने सोचा maximum acceleration पूछा है इसलिए ये max निकाले. This is maximum acceleration for if that is a hollow cylinder. लेकिन क्वेश्चन में maximum acceleration बोला नहीं, general expression for that acceleration पूछ रहा है, that is f by 2m, because from here directly you can get that f is that force by external force acting by I by mr square, hollow cylinder को mr square, r square cancel, m plus m 2m, सीधा सीधा आ रहा है. So option 4 is correct. So dear students, ऐसा more than one option correct questions को एक एक क्वेश्चन परफेक्टली स्टडी करके सोच के एनालिसिस करके निकलना पड़ेगा. सेम क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर दिस थिन हैलो वॉल्व्ड सिलेंडर पूछे तो, हैलो सिलेंडर पूछे तो दैट इज गोइंग टू बी म्यू जी. ये मैक्स ये पूछा नहीं, एक्स्ट्रा डेटा है, कभी आपको जरूरी पड़े तो यूज करो.
So we discussed these two beautiful questions. ऐसा जेई में कौन सा भी चैप्टर हो, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चंस इधर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, दैट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिव यू इन ए बेस्ट conceptual and explanations also in a best way. So follow the videos, get command over the subject, try to achieve your all India ranks. मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।